Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, I am Lieutenant Colonel retired Muhammad Javed Khan from the Department of Education, Sarhad University of Science and Information Technology, Peshawar. Dear students, as you know, I teach you the subject Curriculum Development and Implementation. In the series of lectures delivered, today we are going to have the 28th lecture being delivered. We would be talking about the curriculum monitoring and evaluation, in which particularly we would be discussing the role of evaluation in curriculum improvement and then the processes and practices of curriculum evaluation. To begin with the topic, it is important to know what is the definition of curriculum. We had been frequently discussing what curriculum is, and we have been giving you various sort of definitions what we mean by curriculum. So over here again, just to refresh your knowledge, we would have a quick review of what curriculum is. Dear students, curriculum in education is related to a planned activity, and this very activity is meant for the purpose to pursue certain objectives, to attain educational aims, and to bring about students' learning. Over here, curriculum is that which is taught in schools. Schools are basically the formal seats of learning. Schools are meant for the purpose of teaching and learning process, and learning is the basic aim of the students. ये जो करिकुलम है ये बुनियादी तौर पे स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाता है, और जब हम स्कूल के अंदर कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो वो एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से पहले से तयशुदा होती है. इट इज़ ऑलरेडी प्लान्ड. कोई भी स्कूल जो है वो बग़ैर प्लानिंग के, बग़ैर ऑर्गेनाइजेशन के, बग़ैर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नहीं खोला जाता, न चल सकता है. लिहाजा स्कूल का एक एक दिन और एक एक घंटा जो है वो हर सब्जेक्ट के लिए बाकायदा मुतय्यन किया हुआ होता है, और उस तयन के हिसाब से स्कूल के अंदर जो स्टाफ, फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोशिश करते हैं कि दिन के अंदर जितने काम उस दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, बच्चों को जो सब्जेक्ट पढ़ाना है, जो टॉपिक पढ़ाना है, उनको जिन बारे में उनकी स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना है वो उसी दिन मुमकिन हो जाए, क्योंकि अगले दिन कुछ और SLOs होंगे, कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि प्लान हुए होते हैं. अगर आज का काम कल पे रह जाता है तो वो जो है कल का काम फिर अगले दिन पे जाएगा. लिहाजा चीज़ें गड़बड़ होंगी और प्रॉब्लमेटिक होंगी. लिहाजा स्कूल्स जो हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि उसके अंदर एजुकेशनल कैलेंडर होता है, ईयरली कैलेंडर होता है, बाकायदा टाइम टेबल होता है, और हर दिन के अंदर दी टॉपिक्स आर स्पेसिफाइड कि किस क्लास में कौन क्लास को लेगा, कौन सी एक्टिविटीज़ करेगा और क्या वो पढ़ाने जाएगा. और इस लिहाज से टीचर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बाकायदा तैयारी के साथ आए, ताकि बच्चों का जो है वो टाइम ज़ाया ना हो और जो टाइम जिस मकसद के लिए है वो हासिल हो जाए. लिहाजा स्कूल्स जो हैं वो फॉर्मल सीट्स ऑफ लर्निंग हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर एक प्लान तरीके से करिकुलम को पढ़ाया जाता है. सो करिकुलम इज़ फॉर द पर्पस टू बी टॉट इन द स्कूल. द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम इज़ दैट बेसिकली इट इज़ इन अ सिंपल वर्ड्स यू कैन से इट इज़ अ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स. जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं उनको पढ़ाया जाता है, वी कॉल दैट इज़ करिकुलम. अगर लेमैन की ज़ुबान में हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंटेंट हम पढ़ाते हैं, जो बुक्स के अंदर जो कंटेंट होता है, दैट मेक दी करिकुलम. करिकुलम को हम प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ भी कह सकते हैं. इट इज़ अ सेट ऑफ मटीरियल्स, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज, इट इज़ अ कोर्स ऑफ स्टडी, इट इज़ अ सेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स. कि जो ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं उनको हासिल करने के लिए करिकुलम इज़ बेसिकली दी पाथवे टू अचीव दैम. Everything that goes on within the premises of the school, including extra
class activities which we call the co-curricular activities, whether there is some guidance and counseling going on of the students, whether that is being done formally or informally, that is in the grounds, in the field, or students have interaction with each other, and because of that interaction the students interpersonally relate with each other, they talk with each other, they meet with each other. So learning takes place. So everything which is going on in the school is basically part of the curriculum. Everything that is planned by the school personnel, we call that as curriculum. Curriculum is a series of experiences undergone by learners in a school, that which an individual learner experiences as a result of schooling. An aggregate of courses of study in a school system is called as curriculum. Both planned and unplanned concept, content, skills, work habits, means of assessment, attitudes and instructional strategies taught in the classroom, and the variety of school activities in and out of the class that influence present and future academic, social, emotional and physical growth of the students is termed as curriculum. So this is the sort of definition which is quite elaborative. Finally, we come to the conclusion that curriculum is a comprehensive plan for an educational training program course to offer a new or improved manpower to fulfill the rising needs of our dynamic society. Now we would briefly talk about what are the various stages of the curriculum development. जब हम curriculum बनाते हैं तो curriculum developers जो हैं उनके सामने कौन से मराहिल है जिनसे वो curriculum को निकाल के finally पेश करते हैं. सबसे पहले जो curriculum के से related जो बात होती है that is planning, कि curriculum के बारे में plan करते हैं, concepts बनाते हैं, उनको time frame में रखते हैं कि how curriculum is going to be planned. Then after planning comes the execution part, that is the practical part of preparing the curriculum. Then once we are set to prepare the curriculum, we need to have a certain design for the curriculum. Okay, what sort of curriculum it should be. There are various designs, there are various ways to present a curriculum. So what type of design is being weaved and what type of design is being needed for a particular educational program. So designing basically incorporates certain influences. There are the philosophical, the economical, the sociological, the psychological, the historical aspects which are being considered while designing the curriculum. Then we develop the curriculum after determining what should be the design. Then the actual developing starts. Then once the curriculum has been developed, now it is ready to be implemented in the educational institutions. So implementation is the part which is meant for the purpose to actually and practically implement it. So implementation of the curriculum takes place in the classroom where the teacher is the focal person. He is the facilitator who brings the curriculum or the content to the in front of the students, and he has a certain trick and method with him with which he tries to implement that very curriculum. If his method and manner and his tricks are impressive, if his teaching methodology is of the sort where he has developed a good style, he is fluent in his talk, he has the command over the subject matter, and he exactly knows that what he is going to derive out of this class. So that is something which is part of the implementation. So the teacher basically implements the curriculum in the classroom, and that is with the help of the student as well, because in the student-centered approach to teaching, the students are taken on board. They are part of the curriculum implementation process as well. Once the curriculum has been implemented and we suppose that students have learnt or the students are learning, so over there the process of evaluating starts.
Evaluating is one is the sort of assessment as well, and the second is the evaluation in the sort of the evaluation of the program, of the school, of the student, of the teaching. That sort of evaluation, it has a two-pronged approach. Then once the curriculum has been assessed, it has been evaluated, now is the time where there must be some drawbacks, and those drawbacks and shortcomings and weaknesses need to be eradicated from the curriculum, and the curriculum needs to be revised. Now a curriculum reformation has to take place. The certain things have to be included, certain things have to be eliminated. So revising is one of the most important aspect, and that is what the whole process of evaluation takes place. So again, the curriculum is to be viewed again, it has to be reformed, it has to be amended, and the weaknesses are to be removed and the strengths are going to be added to it. So curriculum gets refreshed after every few years because of this evaluating process, because of this revision process, and it becomes highly improved. Once the improved curriculum is presented, again the time changes, there are various researches take place, the new things are happening. So with the passage of time, again it would need changes. So curriculum development process in terms of evaluation is the point. After evaluation we need to revise it. So evaluation has a very important role to play in the curriculum development, where it removes the drawbacks, the shortfalls, the weaknesses from the curriculum. After the curriculum has been designed and prepared, it is the time for implementation. So implementation of the curriculum is an instruction scheme of each subject to be completed in the semester. Planning the lessons as per the timetable, using the transactional strategies, using the appropriate media, providing the learning resources, promoting classroom learning experiences, and progressive testing. So once we are implementing curriculum, so the basic point is the last point, that once we are actually implementing the curriculum in the classroom, so the teacher continues with the tests, he continues with the formative assessment and the summative assessments. Dear students, we have earlier discussed what is evaluation. Evaluation is the collection of information on which judgment might be made about the worth and the effectiveness of a particular program. It includes making those judgments so that decision might be made about the future of program, whether to retain the program as it stands, modify it, or throw it altogether. Evaluation is an objective and a very rigid analysis of a continuing or completed project to determine its significance, effectiveness, impact, and sustainability by comparing result with the standards. एवेल्यूएशन तब होता है जब हम किसी प्रोजेक्ट को, किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं, और उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारे सामने उसकी अफादियत जो है और वो सामने आती है। क्या जिस मकसद के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, जिस मकसद के लिए ये प्रोग्राम इन्विजन किया गया था, हैज़ इट बिन एबल टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। लिहाजा जो एवेल्यूएशन है नॉर्मली ये एक फ़ेज़ या कंप्लीट प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के एंड पे लिया जाता है, और वहाँ पे उस प्रोग्राम की इम्पॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, उसकी इफ़ेक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी, इम्पैक्ट और सस्टेनेबिलिटी के जो मायार है उसको देखा जाता है। It is the process of passing value judgment concerning the performance level or attainment of defined objectives. कि आया जो objectives रखे गए थे, जो aims and objectives थे, whether they have been achieved or not. In short, evaluation is a process that critically assesses, tests, and measures the design, implementation, and results of the project are programmed in the light of objectives. An evaluation should provide information that is credible, useful, that is for purposeful and meaningful, which may enable the incorporation of lessons learnt into the decision-making process of both recipients and the donors. Evaluation describes how to assess,
the nature, impact, and value of an activity through the systematic collection, analysis, and interpretation of information with a view to making an informed decision. Evaluation involves three activities, that is, outlining clear purposes, gathering evidences, judgment. Evaluation is a part of development rather than part from it. Now we would discuss, as we talked about curriculum earlier, now how to relate a curriculum with the evaluation. In education, evaluation is used to reference to operation associated with curricula, programs, interventions, methods of teaching and organizational factors. एजुकेशन के अंदर जो हम एवेल्यूएशन का मकसद होता है कि हम करिकुला के ऑपरेशन को देखते हैं, उसके प्रोग्राम, इंटरवेंशंस, मेथड ऑफ टीचिंग और ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स को हम एवेल्यूएट करते हैं कि जो पूरा निज़ाम है वो किस तरीके से चल रहा है, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हाउ दे आर वेल कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर इन अचीविंग द फाइनल रिजल्ट्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स. Curriculum evaluation aims to examine the impact of implemented curriculum on student learning achievement so that the official curriculum can be revised if necessary and to review teaching and learning process in the classroom. Curriculum evaluation जो है वो इस बात का तकाज़ा करता है कि वो करिकुलम के ऊपर स्टूडेंट की लर्निंग से रिलेटेड उसकी जो अचीवमेंट है उसको देखे, उसको परखे और करिकुलम को अगर रिवाइज़ करने की ज़रूरत है तो उसको रिवाइज़ किया जा सके. करिकुलम एवेल्यूएशन का जो बुनियादी मकसद है, दैट इज़ इंट्रा करिकुलम एवेल्यूएशन, टीचर एवेल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एवेल्यूएशन ऑफ टीचर्स, मटेरियल एवेल्यूएशन, verification of methods, evaluation of tests and examinations, checking the learning outcomes while on the field, curriculum review, improvement, changes, modification, system revision. So now we come over to the role of curriculum evaluation. करिकुलम एवेल्यूएशन का एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या रोल है? करिकुलम एवेल्यूएशन ब्रॉडली कंसीव्ड इज़ अ स्टॉक टेकिंग प्रोसेस. हम चीज़ों का मुआजना करते हैं, वो देखते हैं. मतलब है करिकुलम जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो उसके बाद करिकुलम एक्सपर्ट्स या एजुकेशनिस्ट वो सोएंगे नहीं, बल्कि दे विल कीप अ विजिलेंट एंड अ वेकिंग आई कि what processes are taking place, whether the curriculum has been useful in achieving the objectives. A curriculum may be structured in some many ways. For instance, it may be based on the assembly of courses that are deemed necessary to meet certain job requirements. It can be formed from the basis of particular discipline in a faculty or department. It can be designed to meet the needs of the professional or technical programs, or it can be developed based on systematic specification of outcomes. It must therefore be periodically evaluated. जो curriculum है उसका role जो है वो education के अंदर curriculum evaluation का वो बहुत अहम है. करिकुलम जो है एवेल्यूएशन वो इस मकसद के लिए किया जाता है कि बाज़ करिकुलम होते हैं जो कि इस मकसद के लिए होते हैं कि वो सर्टन जॉब क्राइटेरिया को मीट करने के लिए होते हैं, कि इस किस्म के कोर्सेज़ उसके अंदर होते हैं कि स्टूडेंट्स को इमीडिएटली वो कंप्लीट करके वो मार्केट से रिलेटेड जॉब्स उनको मिल सके. कोई ऐसा करिकुलम भी हो सकता है कि उसमें वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट को या पार्टिकुलर फैकल्टी डिपार्टमेंट के अंदर वो पढ़ाया जाता है. सिमिलरली ये अक्सर जो है इट इज़ डिज़ाइंड इन अ मैनर टू मीट द नीड्स ऑफ अ प्रोफेशनल और टेक्निकल प्रोग्राम. इट कैन बी डेवलप्ड बेसिस ऑन सिस्टमेटिक स्पेसिफिकेशन ऑफ आउटकम्स, के पार्टिकुलर आउटकम्स हमें चाहिए होते हैं तो करिकुलम की एवेल्यूएशन की जाती है और उसको रोल को देखा जाता है. लिहाजा ये जो सारे अवामिल हैं इसमें वक्त के साथ चेंजेस आती हैं. लिहाजा करिकुलम एवेल्यूएशन का रोल ये है कि वो इन चीज़ों को नए हालात और तकाज़ों के साथ देखे, उनकी इफ़ेक्टिविटी और एफिशिएंसी देखें कि जिस तरीके से ये करिकुलम इट इज़ टेकिंग प्लेस इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और मतलूबा नताइज की तरफ उसका जो है वो असर है, ज़ोर है, तो वो देखा जाए कि वो क्या अपना रोल जो है वो मुकम्मल कर रहा है या नहीं. It also sees the specific strengths and weaknesses of a curriculum and its implementation. Critical information for strategic changes and policy decisions are taken place once we evolve the curriculum. Inputs needed for improved learning and teaching, indicators for monitoring.
जो इनपुट्स आती हैं लर्निंग और टीचिंग्स के अंदर, तो करिकुलम एवेल्यूएशन का रोल ये है कि वो उनको उसका जायज़ा लेती है। इसी तरह ये जो रोल है करिकुलम एवेल्यूएशन का, वो मॉनिटरिंग भी करता है करिकुलम का। 3 जो मेजर प्रोसेसेस हैं करिकुलम एवेल्यूएशन के अंदर, दैट आर डिस्क्राइबिंग एंड जजिंग एन एजुकेशनल प्रोग्राम और सब्जेक्ट, comparing a student performance with behaviorally stated objectives, and lastly defining, obtaining and using relevant information for decision making purposes। जो करिकुलम इवेल्यूएशन है ये एक इंटरनल प्रोसेस होता है और जो कि मुख्तलिफ जो एजुकेशन के यूनिट्स हैं उनके दरमियान ये अमल में आता है। These may be undertaken regularly by special committees or task forces or curriculum, or may be in the form of the research-based studies. These processes might examine the effectiveness of curriculum content, existing pedagogies and instructional approaches, teacher training and textbooks and instructional material. The processes and practices of curriculum evaluation, जो प्रैक्टिसेस इसके अंदर और प्रोसेसेस यूटिलाइज होती हैं करिकुलम एवेल्यूएशन के अंदर, वो ये है कि करिकुलम एवेल्यूएशन ऑलवेज फॉलोज़ द गोल बेस्ड अप्रोच, कि जब हम ये प्रोसेस को चलाते हैं तो ये पूरा प्रोसेस और प्रैक्टिसेस जो है करिकुलम के, दे आर एम ओरिएंटेड, दे आर गोल ओरिएंटेड, देयर इज़ ऑब्जेक्टिविटी इन इट। ऑब्जेक्टिव्स को देख के करिकुलम को बनाया जाता है और उन ऑब्जेक्टिव को देख के फिर दोबारा इसको इवॉल्व हो जाता है। तो इन प्रोसेस और प्रैक्टिस के अंदर जो गोल हैं वो बड़े ज़रूरी हैं, वो जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए हैं दे आर वेरी नेसेसरी। Determining whether pre-tested stated goals of educational or training programs were met, कि जब प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो मिशन, विजन और जो ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या उनको हासिल करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया था, तो क्या वो मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब हुआ है या नहीं। लिहाजा ये जो हम कहते हैं कि जो ये करिकुलम एवेल्यूएशन है ये गोल फ्री है, तो ये गोल फ्री नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज गोल बेस्ड। So it uncovers and documents what outcomes were occurring in educational or training programs without regard to whether they were intended program goals or a focus। गोल फ्री इस तरह भी हम इसको कह सकते हैं कि बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि करिकुलम के अंदर स्टेटेड नहीं होती, बट स्टिल दे आर पार्ट ऑफ इट, फॉर एग्जांपल द हिडन करिकुलम, तो दैट मे बी गोल फ्री इन टर्म्स कि वो जो है उनका तयन नहीं हुआ होता, बट दे स्टिल अकर, स्टूडेंट्स की लर्निंग हो रही होती है। सो करिकुलम इज़ नॉट ओनली गोल बेस्ड, इट इज़ आल्सो गोल फ्री। लेकिन जनरली स्पीकिंग करिकुलम जो है it is always goal oriented। So once it is not goal oriented, it means it is part of the hidden curriculum, so it has to be seen whether that has been achieved or not। It also sees that whether this very curriculum is responsive or not, do it have the backup of the contingency for events or not, the unforeseen events। Comparing what was intended or instruction to what actually was observed. This is the basic process and practices involved in the curriculum evaluation. Now the approaches to curriculum evaluation. These approaches are basically the processes which are based on the classical curriculum evaluation models as presented by Stuffelbeam and Schenkfield in 1990। इन लोगों ने करिकुलम के कुछ मॉडल्स एवेल्यूएशन के पेश किए हैं जिसकी रूह से ये डिसीजन मेकिंग होते हैं कि जब हम करिकुलम को एवेल्यूएट करते हैं देन इट इनेबल्स अस टू मेक सर्टेन डिसीजंस। द कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट educational or training programs for the purpose of decision making, the accreditation, it is the for forming professional judgments about the processes used with education or training programs. Curriculum evaluation ranges from estimating the performance of a single child in a course through the evaluation of specific instructional materials, methods, activities and techniques to the evaluation of an entire curriculum। जो करिकुलम एवेल्यूएशन है वो न सिर्फ एक नैरो भी हो सकता है, एक
सिंगल चाइल्ड सेंटर्ड भी हो सकता है। एक बच्चे की लर्निंग की हम करिकुलम एवेल्यूएशन कर सकते हैं कि वो कहाँ तक जो है वो करिकुलम को ले पाया है और उसको वो जो है यूज़ लर्निंग उसकी हुई है। दूसरी तरफ पे अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्टिव में जाते हैं तो वी वुड सी के कौन से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स यूज़ हुए हैं, क्या मेथडोलॉजी अडॉप्ट किए हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज़ और टेक्निक्स को यूटिलाइज़ किया गया है। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं इस बात के हवाले से कि एक मुकम्मल करिकुलम को देखा जाता है। लिहाजा करिकुलम एवेल्यूएशन जो है इसका जो अप्रोच है ये एक स्टूडेंट से लेके पूरे तालीमी इदारे के और पूरे करिकुलम को उसका जायज़ा लेने के मुतरादिफ है। A comprehensive curriculum evaluation is concerned with the worthwhileness of the curriculum components, and the information provided is for the sake of facilitative decision making at the various stages of curriculum development. There are three paradigms or worldviews about evaluation. Melrose 1996 grouped existing models into three paradigms for worldviews about evaluation: the functional model, the transactional model, and the critical paradigms of evaluation. The functional paradigm of evaluation usually measure the program outcomes against pre-stated goals. ये फंक्शनल मॉडल जो है ये करिकुलम एवेल्यूएशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें जो पहले से मुरतब किए गए जो मकासद हैं, जो एम्स हैं और गोल्स हैं, उनको जायज़ा लिया जाता है कि आया वो कामयाबी से हासिल हुए हैं या नहीं। The transactional paradigm focus is on whether or not the current expressed needs of stakeholders, especially student or customer or client, have been met and whether the negotiated learning events have met the participant satisfaction. कि इसके अंदर ट्रांजैक्शनल पैराडाइम के अंदर ये देखा जाता है कि बच्चों की जो नीड्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, वो जिस तरह चीज़ों को चाहते थे और उनकी क्या सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव हुआ है या नहीं। The third critical paradigm is basically the evaluation which involves dialogue and collaborative investigation, whereby a focused question is agreed upon by the group for each cycle of evaluation, which may be small or broad in scope. Evaluation thus becomes the systematic community learning process for the collaborative review, improvement and development of policies, programs and practices. The ultimate goal of curriculum evaluation is to ensure that the curriculum is effective in promoting improved quality of student learning. तो ये जो curriculum evaluation हम करते हैं उसमें बुनियादी तौर पे हम स्टूडेंट की असेसमेंट कर रहे होते हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी अवामिल हैं, वो आया अपना मतलूबा नताइज हासिल करने में किस हद तक वो कामयाब हुए हैं और क्या स्टूडेंट्स की क्वालिटी लर्निंग हो रही है या नहीं है। Assessment of student learning has always been a powerful influence on how and what teachers teach, and is thus an important source of feedback on the appropriateness implementation of curriculum content. Different kinds of assessment instruments and strategies selected to achieve specific purposes. Assessment of student learning could be summative or formative, and there are various types of tests to address different needs such as standardized test, performance-based test, ability test, aptitude test, and intelligence test. As we have already discussed, there are two types of evaluation, which are the formative evaluation and summative evaluation. These are basically the processes and practices which are being used during the curriculum evaluation. Formative assessment attempts to provide direct and detailed feedback to both teachers and students regarding the performance and learning of the students. It is a continuous process that observes students' needs and progress in the learning process. Whereas summative evaluation is a method to judge the worth of a curriculum at the end of the syllabus, where the focus is on the outcome. It assesses the training that teachers might need in order to implement a program successfully. Summative evaluation determines whether a new curriculum program, a syllabus or subject is better than the one it is intended to replace or other alternatives. It is a type of evaluation employed at the end of a learning experience to indicate students' progress. It can take the form of a small class assessment or end of
term or final examination. The implications are: the information collected from evaluating a curriculum forms the basis of making judgment about how successfully the program achieved its intended outcomes and its worth. अज़ीज़ तलबा, जब हम करिकुलम एवेल्यूएशन का पूरा प्रोसेस चलाते हैं तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि क्या जो प्रोग्राम के मतलूबा जो आउटकम्स थे वो सक्सेसफुली मीट हो गए हैं या नहीं, वेदर दे हैव बीन अचीव्ड और नॉट. In fact, evaluation serves a range of purposes for everyone involved in education, जैसे कि policy makers, government officials, curriculum developers, schools, educators, students, parents, teachers and tertiary institutions. ये वो लोग हैं जो कि curriculum evaluation से मुस्तफ़ीद होते हैं और curriculum को बेहतर बनाते हैं. Evaluation की जो हिस्ट्री है that goes back to the Chinese emperor in 2200 BC. They required that the public officials demonstrate their proficiency in formal competency tests. In the US, the concern for evaluating schools can be traced at least as far back as the recommendation of the Committee of 10, which at the end of the 19th century set up perhaps the first example of evaluative standards for the nation's secondary schools in 1969. In recent years, however, an interest in curriculum evaluation has increased manifold. The public's insistence on educational accountability, the experts' demand for educational reforms, and the educators' connected need for evidence of results have all contributed to the current interest in theories and methods of curriculum evaluation. अज़ीज़ तलबा, करिकुलम के अंदर जो एवेल्यूएशन है उसका मकसद एजुकेशनल अकाउंटेबिलिटी है, लिहाजा ये एक मुतवातिर तरीके से होती रहती है. बेसिकली एक आवाम की इंसिस्टेंस होती है, लोग चाहते हैं कि एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी हो, एक्सपर्ट्स की डिमांड होती है कि एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म लाया जाए, एजुकेटर्स जो हैं वो कनेक्ट करना चाहते हैं वो नीड्स को एविडेंस और रिज़ल्ट के साथ, और इसी तरह जो मुख्तलिफ़ थीरीज़ हैं उनको जज किया जाता है और मेथड्स ऑफ करिकुलम एवेल्यूएशन को देखा जाता है. लिहाजा करिकुलम एवेल्यूएशन के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कई ज़्यादा हैं और उनके जो अपने अपने मकासद हैं वो करिकुलम एवेल्यूएशन के थ्रू वो उनको हासिल करना चाहते हैं. The foregoing analysis yields this stipulative definition of curriculum evaluation. Basically, it is the assessment of the merit and the worth of a program studies, a field of study or a course of study. The role of technology in curriculum evaluation and in its processes and practices. The rapid changes occurring in computer technology pose a challenge to establishing effective evaluation programs. Technology capabilities have changed faster than educational research. अज़ीज़ तलबा, जो आजकल के दौर में जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो चेंज आ रही है और ये टेक्नोलॉजी इस हद तक कैपेबल है कि वो एजुकेशनल रिसर्च से पहले जो है वो वारिद हो जाती है. हम एजुकेशनल रिसर्च जो है उसके बाद करते हैं और उसके जो नए टेक्नोलॉजी और इसकी जो यूज़ेस है एजुकेशन के अंदर करिकुलम एवेल्यूएशन में वो पहले आ जाती हैं. लिहाजा टेक्नोलॉजी इज़ मूविंग इट विद अ वेरी रैपिड फेज स्पीड और उसकी जो इम्पैक्ट हैं वो बहुत तेज़ हैं. लिहाजा एजुकेशनल रिसर्च के अंदर करिकुलम एवेल्यूएशन को तेज़ करने की ज़रूरत है ताकि हम किसी नतीजे पे फ़ौरन पहुँचे और हम जो है मतलूबा जो चेंजेस हैं उनको अमल में लाएँ. Initial evidence on the use of computers in the classroom showed that drill and practice activities were successful in reinforcing skills. The evaluation of the written curriculum and its effectiveness is more dependent on the taught curriculum.
जो एवेल्यूएशन है रिटन करिकुलम का वो हम कम ही करते हैं। जब हम एवेल्यूएशन करने पे आते हैं तो रिटन करिकुलम से हट के हम ये देखते हैं कि जो चीज़ पढ़ाई गई उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है। उस इफ़ेक्टिवनेस कहाँ नज़र आएगी, वो स्टूडेंट के ऊपर आएगी, उसके बिहेवियर के ऊपर, उसकी एटीट्यूड और कॉग्निशन के ऊपर आएगी, उसकी एप्लीकेशन के अंदर आएगी। सो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन करिकुलम एवेल्यूएशन than the written curriculum document. To be effective, the written curriculum needs to be taught curriculum. एक written curriculum को effective बनाने के लिए ज़रूरी है कि that has to be first taught. Certain strategies that are successful administrators use in evaluation. जो मुख्तलिफ strategies होती हैं curriculum evaluation के अंदर वो यही हैं कि गोल सेटिंग हो, इसके अंदर indicators और standards पहले से मुतय्यन किए हों. The evaluation and assessment process must be linked to the original mission statement and objectives. और जब हम प्रोग्राम को चलाने के बाद, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद जब आते हैं तो हम वापस जंप करते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम के और प्रोजेक्ट के स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और उनको स्टैंडर्ड बना के हम उनकी इफ़ेक्टिविटी को देखते हैं. Curriculum integration for evaluation proposes should be established during the early planning stages of the program. Identifying a target population, successful evaluation and assessment procedure should focus on targeting specific external and internal population groups. Parents and community represent external groups. Administrators, teachers and students represent target groups. Data collection needs to focus specifically on these target areas and how they relate to school and curriculum. Regardless of the process used to evaluate a program, planners need to be willing to utilize data and make changes and adjustments where necessary. They must understand that curriculum improvement and instructional improvement are interconnected and that a change in one area will probably elicit a change in another area. Curriculum leaders could focus more on how technology can help teachers with student achievement in the future. Dear students, once we relate and talk about the curriculum evaluation, तो उसके अंदर ये बात देखना और समझना बहुत ज़रूरी है कि करिकुलम के जो अहदाफ रखे गए थे उन अहदाफ को हासिल करने के लिए जब पूरा प्रोसेस चलाया गया तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो किस हद तक वो कारआमद साबित हुआ और उसकी इफ़ेक्टिविटी क्या है. लिहाजा ये देखने के लिए करिकुलम एवेल्यूएशन की जाती है और करिकुलम एवेल्यूएशन जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है कि करिकुलम एवेल्यूएशन किसी प्रोग्राम के एक फ़ेज़ या एक स्टेज मुकम्मल होने पे की जाती है या जब करिकुलम को एक प्रोग्राम या कोर्स को फुली इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसके बाद करिकुलम को वापस जाके देखा जाता है कि आया करिकुलम ने जो इनिशियली जो कि स्टार्ट के अंदर जो गोल्स, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के विज़न और मिशन भी हो सकते हैं उनको अचीव करने के लिए किस हद तक वो कामयाब हुए हैं. अगर वो कामयाब हुए हैं तो वेल एंड गुड. अगर वो कामयाब नहीं हुए तो वो कैसा तर्ज़ अमल इख्तियार किया जाएगा जिसकी रूह से उसके अंदर मुख्तलिफ़ चेंजेस लाई जाएं और उस चेंजेस की बदौलत वो जो वीकनेसेस हैं उनको रिमूव किया जाए और उनको रिमूव करने के बाद उसको बेहतर बनाने के बाद दोबारा उस करिकुलम को चलाया जाए. सो करिकुलम एवेल्यूएशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस. हम जब भी करिकुलम के अंदर चेंजेस लाएंगे तो उनके असरात हम देखना पसंद करेंगे. उसकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस ऑफ जो इंस्ट्रक्शन और करिकुलम है उसको देखा जाता है. लिहाजा करिकुलम एवेल्यूएशन इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ वेरी यूज़फुल, मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल. The evaluation of the written curriculum and its effectiveness is more dependent on the taught curriculum. अज़ीज़ तलबा, जो करिकुलम है वो एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में होता है
जब भी करिकुलम एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में होगा, वो एक रिटन फॉर्म में होगा, तो वो एक स्टैटिक हालत में होगा। उसको अमल में लाने के लिए, उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए ये ज़रूरी है कि उस करिकुलम को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उनको प्लान करके, उसको टाइम टेबल बना के उनको जो है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे क्लासरूम के अंदर। लिहाजा जब टीचर्स जो है करिकुलम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस दौरान ये देखा जाता है कि आया करिकुलम के अंदर कोई इश्यूज़ तो नहीं है। जब टीचर करिकुलम को पढ़ाने जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली ख़ुद भी उनको पता चलता रहता है कि क्या कुछ हो रहा है, इसके अंदर क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। लिहाजा इसलिए हम जो टीचर्स हैं उनको हम बहैसियत एक करिकुलम एक्सपर्ट के भी उससे राय लेते हैं कि वो, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल चीज़ों का ज़्यादा पता होता है, दे एग्जैक्टली नोज कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और इश्यूज़ हैं। करिकुलम एवेल्यूएशन जब हम करते हैं तो उसके अंदर करिकुलम के जो मतलूबा नताइज होते हैं वो स्टूडेंट्स की लर्निंग की शक्ल में सामने आते हैं। स्टूडेंट की बिहेवियर, एटीट्यूड और इसकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग है उसके अंदर क्या असरात आए, ये देखने के लिए एवेल्यूएशन का अमल में लाया जाता है और करिकुलम को देखा जाता है कि वेदर इट हैज़ सक्सेसफुली बिन इम्प्लीमेंटेड और नॉट। लिहाजा हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो एज अ डॉक्यूमेंट करिकुलम इज़ नथिंग, इन द रिटन फॉर्म करिकुलम इज़ नथिंग, करिकुलम इज़ यूजफुल ओनली व्हेन इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड, and after the implementation it is being seen that to what extent it has been effective and it has efficiently achieved its goals. अज़ीज़ तलबा, स्ट्रेटजीज़ के बारे में हमने बात की कि जो एवेल्यूएशन स्ट्रेटजीज़ होती हैं करिकुलम के अंदर वो मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके करिकुलम के मतलूबा जो नताइज हैं उसको देखने में और उनको असेस करने में हमें मदद हासिल होती है। लिहाजा करिकुलम की जो एवेल्यूएशन स्ट्रेटजीज़ हैं, जब हम एवेल्यूएशन को स्टार्ट करते हैं तो बुनियादी तौर पे वी गो बैक to the basic aims and objectives which were set forth with in the beginning of the curriculum. तो करिकुलम जो है वी हैव ऑलवेज सेड कि करिकुलम इज़ ऑलवेज आफ्टर गोल्स, इट इज़ ऑलवेज आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशन और करिकुलम्स की जब हम बात करेंगे तो इसका मकसद ही यही होता है कि ये किसी नताइज को, किसी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने का एक तरीका है। लिहाजा ये देखना कि जब करिकुलम के ऊपर इतनी एनर्जी सर्फ हो गई, उसके अंदर इतनी जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आए, तो उस तनाज़ुर में जब हम करिकुलम को देखेंगे कि आया इसने अपने मतलूबा जो नताइज हैं वो बेहतर तरीके से वो हासिल किए हैं या उसको हासिल करने में ये किस हद तक कामयाब हुआ है या उसमें मुकम्मल नाकामी सामने आई है। लिहाजा करिकुलम एवेल्यूएशन जो है वो एक बाकायदा प्रोसेस है, ये वो प्रैक्टिसेस हैं जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको अपनाते हैं और उनको अपनाने के बाद हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं। सो करिकुलम जो है वो बुनियादी तौर पे इट गिव्स अस एन इंसाइट इनटू द एवेल्यूएशन प्रोसेस कि ये कहाँ तक हम इसको कामयाब हुए हैं। करिकुलम को जब हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो ये जो है हम उस प्रोसेस को दोबारा नए सिरे से शुरू करते हैं। नाउ वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज़ क्लास। आज हमने पढ़ा कि करिकुलम ऑपरेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट बिकम्स ऑब्सोलीट एंड डिटेरियोरेट विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि जब हम करिकुलम को एक अरसे पे चलाते हैं, ज़्यादा ज़रा गुजर जाता है तो उसके अंदर वो पुराना हो जाता है, दकियानूसी हो जाता है। सो करिकुलम नीड्स टू बी रिवाइज्ड। द एवेल्यूएशन prevents this happen and quality control of the program is maintained। अभी करिकुलम को हम ख़राब होने से बचाने के लिए हम एवेल्यूएशन का अमल लाते हैं जिसके ज़रिए से
करिकुलम को दोबारा देखा जाता है. क्वालिटी कंट्रोल में रिवील व्हेन सम ऑफ ऑल पोर्शंस of the program should be altered or replaced. Quality control leads towards updating old program and production of second generation program. Evaluation process of evaluating how well education is delivered. Education incorporates achievement trends in individual classrooms and school. Without evaluations, educational institution exactly tell of what work and what does not work. सो एजुकेशन एवेल्यूएशन के बग़ैर हमें कोई पता नहीं चलता कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहाँ लीड कर रहे हैं, वो कहाँ पे लैंड कर रहे हैं और वो आया वो अपने मतलूबा जो मकासद हैं वो हासिल कर रहे हैं या नहीं. सो एवेल्यूएशन प्रोसेस इन करिकुलम डेवलपमेंट हैज़ गॉट ग्रेटर सिग्निफिकेंस. So dear students, with this we come to the conclusion of our today's class. Thank you very much.